So now we'll discuss about moment of inertia. Moment of inertia. It's also very, very important topic. Moment of inertia. Now we'll discuss about this moment of inertia. What is inertia? Inertia samaste padicha laws of motion chapter. Mate ki koiba inertia mane kono? Who can tell me? What is inertia? Anybody? Can anybody tell me what is inertia? The tendency of a body to resist the change. To resist. Okay. Next. So the tendency of a body to retain its to remain in its state of motion or either in rest. Okay. Next. It is the property of the body by virtue of which it continues to be at rest or in uniform motion unless it is compelled by an external force. Okay, good. So it's a property of a body. So if no external force acts, then it continues in state of rest or if uniform motion in a particular direction. This is called inertia. The same quantity. Also we'll discuss this rotation chapter. What is inertia called in kinematics in our laws of motion chapter? जब inertia बोले कहते हैं, सेटा linear motion पाइन थिला, तार corresponding sentence, एटी कौन आसिबो? ना moment of inertia. Exact तार corresponding आसिबो एटी moment of inertia. तामाने जहाँ को तुम inertia कहते लो, एटी सेटा moment of inertia. आउ changes किसी नहीं. See समान जिनसा. सेटी inertia टी moment of inertia. सेटी भी unwillingness, एटी भी unwillingness. जे पर्यंत फोर्स पड़ीनी बॉडी कोडे मूव करिवनी एठी भी सेमति जे पर्यंत एंगुलर फोर्स न पड़ीची पर सेठी जाको फोर्स बोली कहउतिलो एटा तमे एंगुलर फोर्स बोली कहइबो काहे कि एंगुलर फोर्स सेठी फोर्स थिला तार करेस्पोंडिंग क्वांटिटी एठी जे मोशन करइबो जे बुलेइबो रोटेशनल पाथ रे ता नाला एंगुलर फोर्स बट कोडे वर्ड यूज कर जे हमरा टॉर्क जा विषय रे हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा टॉर्क मन रखता हला फोर्स रे करेस्पोंडिंग angular force but turning effect of force को torque and we will discuss about it after moment of inertia we'll discuss got it तामाने जे पर्यंत फोर्स पड़ीनी सेठी जहा थिला एठी भी से तले moment of inertia definition accordingly कौन हबो a body continues its state of rest or of uniform motion तो कोई परिवानी यूनिफॉर्म मोशन तो कहि परिबानी काहे ना एठी रोटेशन होची रोटेशन रे तो यूनिफॉर्म मोशन नुहा काने यूनिफॉर्म मोशन रे वेलोसिटी कांस्टेंट माने डायरेक्शन कांस्टेंट थाए बट एठी तमे सेटा कहि परिबानी एठी कोन भाई कहबा ए बॉडी कंटीन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट Rotational motion और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन माने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रे बुलुची माने एमती बुलुथिबो हला बोलछो नहीं तो बोलछो unless external torque acts on it external torque so the force कहउतिला ना एठी में torque Yes, sir. okay unless external torque acts on it moment of inertia moment of inertia is the property of the body by virtue of which it continues its state of rest or of uniform rotational motion unless it is compelled by some external torque. So this is the definition of moment of inertia. Inertia depends on which quantity? Mane paka laws of motion re. Mane paka. mass. Only mass. Only mass. Khali mass upre depend koruthila. गोटे हाथी रो मोमेंट ऑफ हाथी रो इनर्शिया बेसी गोटे पिंपुडी रो कम सेहि पे हम हाथी को जल्दी मोशन करि परिबो गोटे पिंपुडी को मोशन करि देबो ना नहीं अधिक मास तो अधिक इनर्शिया रेशियो माने मास रेशियो इट इज एम्प्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा ऊपर डिपेंड करे नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट हम डिस्कशन करिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकल फार्मूला कोन ओके गोटे बॉडी टे तले रोटेट करिवो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी गोटे बॉडी टे रोटेट करिवो रोटेट करिया को बॉडी रो
अनविलिंगनेस तार इच्छा अछि कि नै रोटेट करिया पई हला जदि गोटे तमे छोट बॉडी टे नबो से केते इजीली रोटेट करे दबो गोटे बड़ बॉडी टे नबो रोटेट करिया टिके कष्ट हबो तुमको बुझला नै बिकॉज ऑफ ओनली इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तापर बॉडी रो कोठी की धरि की तुम रोटेट करूछो हला दैट आल्सो डिपेंड्स को जगह रे धरले बॉडी टा इजीली बुली परिबो कोठी की धरले इजीली बुलेई परिबोनी तापर भी डिपेंड करे हला ओके सो एटा गोटे सिस्टम टा मु तुम आगु कहि छि जेते बेले भी चैप्टर रे सिस्टम कथा आसो मु एम्प्टी कर देबी m1 m2 अप टू डॉट mn डिस्क्रीट सिस्टम ये वर्तमान एक्सेस सरिपटे बुलिबो एटा एक्सेस तार रोटेशन एटा एक्सेस कथा कहितली मु एम्प्टी एक्सेस तुम को सर एक्सेस मजिर न नांती जोठी नेले भी मोर किछि फरक पड़िबार नै मु एटा एक्सेस टा नेछि ए जो r1 r2 rn एटा अप टू rn एटा सब कोन पार्टिकल माने कर एक्सेस रो को डिस्टेंस perpendicular distance. गुड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एबा सो पार्टिकल मानकर एक्सेस रो सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस गॉट इट सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके तले मु जेतबे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्तमान आर फार्मूला लिखिबी तले कोन फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला यू विल गेट m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर dot 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 mn rn square so this is the formula of moment of inertia of this discrete system of the discrete system got it discrete system ro formula m1 r1 square plus m2 r2 square up to dot dot rn square you have to mug up this formula you have to remember this formula but this is for discrete अब तुम जानि छ ए चैप्टर रे दीदीटा कथा चलछि गोटे डिस्क्रीट रो कथा चलछि आ गोटे का कथा चलछि कंटीन्यूअस कथा चलछि कंटीन्यूअस केस रे त हम गोटे सबटु भलो एग्जांपल को धरछ रॉड के रॉड टा ए रॉड रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम मनकर बाहर करे को तुमको दिया जीवा एक्सेस कोडा एटा जोठी भी एक्सेस नियो दैट डजंट मैटर हैला तुम जो पटे एक्सेस नियो तन एक्सेस ऊपर डिपेंड करी गोटे बॉडी बुलिबो एटी मनकर त एक्सेस मनली सेमती बुलिबो लाइक दिस हैला एक्सेस नेली ठीक एमती एक्सेस नेबी सेमती बुलिबो केते प्रकार जेमती केते प्रकार एमती एक्सेस नेबी से एमती एमती बुलिबो ओके केते एक्सेस विभिन्न प्रकार हे परिबो ओके तले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाहर करबी तले मोसे कोन करियो पड़िबो टेल मी कंटीन्यूअस बॉडी कैसे कहितली इंटीग्रेशन हमें फास्ट कोन करबा कोन करिया कहितली गोटे स्मॉल पार्ट कंसीडर करी डीएम गोटे छोटो मास कंसीडर करबा डीएम जे की केते डिस्टेंस रे अछि आर हले से छोटो एटलीस्ट से स्मॉल मास टा को हमें गोटे छोटो पार्टिकल बोली धरि पारिबा बुझला ने एटी जेमते m1 लिखा होचे सेमते dm तर r तले एटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर कले म केमति बाहर करबी कंटीन्यूअस केस रे एटी जेमते m1 लिखा होचे एटी सेमते dm लिखा हबो एटी जेमते r1 स्क्वायर लिखा होचे तार होचे r त r स्क्वायर लिखा हबो बट ता पर एटी जेमते पार्टिकल टू पार्टिकल ऐड करा होचे एटी तो सेमति नाही एथि एडिशन जगह खाली कोन हबो इंटीग्रेशन ऑफ dm r square होला एति कोच पाठ खाली एडिशन जगह इंटीग्रेशन पाठ हला त का बिठ बुझले माने एटला डिसकंटीन्यूअस बॉडी रो एटला डिस्क्रीट बॉडी रो फार्मूला यदि हम एटी गोटे दिरा न्यूमेरिकल करि दबा तमे आउट के डाउट क्लियर हो जिवो ता पूर्वरु खाली गोटे कथा म कहस तुमको ए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा का ऊपर डिपेंड करे ऑन व्हिच फैक्टर्स इट डिपेंड्स से तो खाली मास ऊपर डिपेंड कला ये कहा का ऊपर डिपेंड करिवो मास तो पक्का ओके मास ऊपर डिपेंड कला दैट्स perpendicular राइट distance from the axis. perpendicular distance आउटला डिस्टेंस माने डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स perpendicular distance कार of particles from the axis of rotation तो particles माने केते डिस्टेंस अछि ता ऊपर डिपेंड कला आ गोटे भी तुम लिखि परिबो axis of rotation axis of rotation हेले perpendicular distance भी बदल जिवो नै कोन perpendicular distance indirectly आ कोन तुम axis को चेंज करले perpendicular distance बदल जिवो particle मान पोजीशन चेंज करले भी perpendicular distance बदल जिवो हैला त माने perpendicular distance पर डिपेंड करे बट आ गोटे खाली जोड़ी दिले axis of rotation axis of rotation अलगा हले मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलगा हो हैला को जगह को धरले गोटे जिंस इजीली बुली परिबो कोडी धरले बुली परिबोनी भलरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तर अनविलिंगनेस बुलिया पन हैला देखो एटा गोटे भले बुझबे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोन ओके सिंपल एग्जांपल मु तमन को कहूछ सपोज मु वर्तमान मु निज चारिपटे बुलिबे एमते हाथ को स्ट्रेच करी एमते बुलिबी ठीक पर एमते बुलिबी मोर एक्सिस कोटा जे मते कहबो मो एक्सिस कोटा एटा
ना नहीं दिस द एक्सिस Yes. Yes, sir. एक्सिस ना मो मुंड ऊपर देखि जाईछि मो निज चारिपटे एमती चका चका भौरी हैला जो मामू घर चौरी गीत थिला जेंत पिला दिने हैला जो मामू मते कोन माइले हैला माई मते कोन ओटे दूध भात खोइले जो पिला दिने राउंड राउंड बोलथिला मो सेम राउंड राउंड बोली तनी मो राउंड राउंड बोली एटा मो एक्सिस हैला एटा एक्सिस हैला बतन मते को मोले हाथ को स्ट्रेच करके रखिछि सेम पार्टिकल बट केते डिस्टेंस रे अछन देखो बट मु बुलिया भीतर जदी मु हाथ को एमती कर देबी आई विल ब्रिंग द हैंड्स टू क्लोज टू माय बॉडी एमती बुलिबी ताले से सेम पार्टिकल से सेम मास माने मो हाथ मो फिंगर बट एबे देखो एक्सिस बतन एटा केस 1 फर्स्ट केस एटा सेकंड केस मु बुलुछ मते को केस रे अधिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो फर्स्ट केस ना सेकंड केस First case. First case. Case. काहे की फर्स्ट केस Sir, it is directly proportional to distance. काहे की फर्स्ट केस दिस इज फर्स्ट केस दिस इज सेकंड केस के मते को व्हाई फर्स्ट केस रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काहे की अधिक Sir, moment of inertia is directly proportional to the perpendicular distance. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स आओ एति को हला डिरेक्ट प्रश्न एते कहया दरकार नै मोमेंट जे एठी जेतले हाथ को स्ट्रेच करिथिली सेतले परपेंडिकुलर डिस्टेंस अधिक थिला सेम मास किंतु परपेंडिकुलर डिस्टेंस अधिक बट जेतले सेम मास आसी गला पाखो को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतन कोन हला कमी गला. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतन कमी गला हला त बतन एबे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कमी गला माने मास किंतु समान अछि सेम तो मो हाथ ना एडा हला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतन कमी गले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन हबो कमी जो ना कमी बढ़ी जीव. कमी जो बिकॉज़ आर कमी गला ना r1 r2 कमी गला एंती स्ट्रेच करला r1 r2 बढ़ी गला कन एक्सिस टा पूरा एंती मो बॉडी भीतर देकी पास करछ एंती सीधा हला सीधा बर्तन जाउछ हला बर्तन एबे डिस्टेंस बढ़ी गला पखली डिस्टेंस कमी गला डिस्टेंस बढ़ी गला डिस्टेंस कमी गला हला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस ओके दिस आर द फंडामेंटल्स हम यूज करबा आगु को सेत में भले बुझुता इफ एनी डाउट देन यू आस्क मी कोड जे टिक्की भी डाउट तुमको लागु छ मते पचर जे सर या हमको टिक्की डाउट लागु छ नो डाउट एवरीवन अंडरस्टूड Yes, sir. ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तले डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करला बले बुझेली हम आ गोटे क्वेश्चन कोड दिरा कर दबा जे आहुरी क्लैरिटी भी पळे आसीबो केमती डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर लेट्स डू गोटे सिंपल क्वेश्चन टे करबा आगे तापर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को एटा एक्सिस चारिपटे एटा गोटे अछि स्क्वायर ता मो गोटे एटा बतन गोटे स्क्वायर अछि एबीसीडी सबुठी 2 ग्राम लेखे मास बससी मो समान मास नोची फॉर सिंपलिसिटी हला सहज अब टिके करिया पे बेले मो समान मास नोची और साइड को नै जाउछि सबुठी ए ओके ए काहे नवा साइड को नै जिया ताकू भी नै जिया 4 सेंटीमीटर राइट चारटा पार्टिकल एमते अछंती 4 सेंटीमीटर होछि स्क्वायर रो साइड हला साइड होछि स्क्वायर 4 सेंटीमीटर राइट बट से कोछि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi okay or moi ta कोन moi find मोमेंट ऑफ इनर्शिया find moi okay about का थ्रू रे हमें बाहर करे को चाहूछ about बीट a about ad माने ad को एक्सेस करी कि ता थ्रू रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर कर about ad fast all of you do it fast do it try quick okay let's see the answer I'm doing so I what is the formula m1 r1 square m2 r2 square m3 r3 square m4 r4 square चारटा मास एठी अछि तो m1 तुम जहा को m1 नोच नियो सपोज एटा को नबा d पॉइंट जोटा छै m1 नबा तार डिस्टेंस केते परपेंडिकुलर डिस्टेंस केते 0. 0. तो ये ला 0 तमने ये 0 हो गला हला r1 0 हो गला कने से निजे एक्सिस ऊपर अछि ना निजे जे एक्सिस ऊपर अछि एक्सिस रो द डिस्टेंस केते ऑब्वियसली 0 ए 2 ग्राम रो केते डिस्टेंस 4 4. cent. 4 ताले m2 हला 2 डिस्टेंस हला 4 स्क्वायर राइट देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ता 4 सीधा परपेंडिकुलर रोटे ड्रा कर दबा एक्सिस रो से पर्यंत 2 ग्राम रो केते बी पॉइंट जो बसछि
4 centimeter. 4 centimeter. हाँ सबुड़ा 4 सेंटीमीटर लिखे है ना जे 80 बस जिता परपेंडिकुलर डिस्टेंस के दे 4 centimeter. 4 4 centimeter. centimeter. 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर ओके तार भी एटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एबीटा तार परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छा ए रो जे ए रो छी 0. 0 चल आंसर ओके 4 स्क्वायर कितने 16 64 the answer then I forgot to tell you the unit gram into centimeter square moment of inertia में unit को भूल गए तुमको gram into centimeter square kg into meter square accordingly dimensional formula by m1 l2 and moment of inertia is a tensor remember moment of inertia is not a scalar not a vector it is a tensor what is tensor you will read in higher classes I had told you earlier in vector chapter I have discussed everything about tensor. Okay, so many students also send the answer 64. It's very nice. But this is about AD. I hope everybody understood. Okay, next I would say some question. I option change bit B. Let's take let's take suppose axis is SC. About SC. SC is your axis now. SC is your axis now. This is the axis of rotation. This is the axis of rotation now. Do it quick. Let's do it. About SC. So about SC. So let's do here about SC. Okay, same formula. No change in the formula. खाली से R1 R2 गुड़ा सब change हो बाकी formula समान. Okay, खाली R1 R2 सब change हो. देखा. M1 जहाँ को तुम 1 नौ चुने किसी फरक नहीं. हाँ ठीक है जी जल्दी तुम्हें नबो 1 का गो D को नबो आकु 1 नबो तो 1 ने आकु 1 मैं नंबरिंग कर दूँ तुम जेम तो नौ थला 1 2 3 4 एम तो नौ तो 1 नौ 1 2 3 4 एटा 2 ग्राम 2 ग्राम रा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने 2 root 2. 2 root 2. एटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना ओके Sir, root 2 आवा. पूरा एमती लंबी बड़े पर्यंत भी लंबी डायगोनल रो ता माने अधाटा होची परपेंडिकुलर डिस्टेंस काने स्क्वायर टा गोटे डायगोनल रो अधा जदी A4 और A4 ताले डायगोनल टा केते होल डायगोनल टा केते 4 root 2. 4 root 2. 4 root 2 4 root रो अधा केते 2 root 2. 2 root 2. 2 root 2 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 root 2 ओके तो m1 हला 2 ग्राम into 2 root 2 रो स्क्वायर m2 आकु नै छ तमे 0 बतन एबे c एक्सिस ऊपर को पळे आसला तमे से 0 हो गेला m3 नै छ तमे 2 ग्राम c भी से 2 root 2 रो स्क्वायर और m4 टा 0 हो गेला काने से निजे एक्सिस ऊपर अछि तले 2 root 2 square means this is 4 into 2 8 8 2 like 16 am I correct 2 square 4 into 2 8 8 into 2 16 16 16 there what the answer 32. 32 gram into centimeter square right 32 gram into centimeter square 32 okay nice many students send the answer 32 Swarmila sent fast very good then obviously send very nice okay so 32 gram into centimeter square so about to SC let's again do another axis bit C केमते एक्सिस चेंज कले मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होउछा पूर्वटा 64 आस्तिला ना एटा 32 आस्ला हला अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस passes through plane passes through center sorry perpendicular axis passes through center perpendicular axis passes through center do it passes through center it will pass through center you see this is the center through center the axis pass this axis you imagine how the body will move okay if it is a square the body will move like this through center do it quick
Okay, so now let's see the answer. About perpendicular axis passes through center. About perpendicular axis. So this is the axis, huh? Now tell me, only change will be in the distance. Masses are same. So this 2 gram is at how much distance from perpendicular axis? 2 root 2. 2 root 2. Then this 2 gram? 2 root 2. 2 root 2 root 2. This is the perpendicular distance. This one, 2 root 2. This one, 2 root 2. So all are at how much distance from the perpendicular axis? All are at 2 root 2 to square. So this is also 2 into 2 root 2 square. Then plus this is also 2 into 2 root 2 square. So it's 16 plus 16 plus 16 plus 16. Then what is the answer? 64 gram into centimeters. Gram into centimeter square. Got it? So this is the moment of inertia about the perpendicular axis passes through the center. Right? So moment of inertia, what is moment of inertia? And we discuss also the question of one important question of a moment of inertia, which is very fundamental one.